Chapter number 10 is about thermal expansion. ठीक है, thermal expansion means कि जब हम लोग बल्कि I should go with this one, not this one. I have notes उसमें. I could send you the copy as well. इसके अंदर तो images की form में save होगा. Okay. Without any hassle, we can continue with this lecture now. Chapter number 10 is about thermal expansion. When it comes to thermal expansion, there are a few things that we need to keep in our mind. ठीक है? First thing is that we need to consider into mind which state we are dealing with, whether it's solid, liquid, or gas. We have studied in the previous chapter number 9 that solid, the particles are compact, which means they are closer to each other and have high density and high intermolecular forces. ठीक हो गया? What is intermolecular? What is Intermolecular intermolecular forces, the forces that exist between the particles. जैसे everything is made up of atoms ना. So जब आप एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में एटम्स होंगे, ठीक है? अब इन दो हाइड्रोजन के एटम्स के इन बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, which is keeping it as an element, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है? This force is known as the intermolecular force. मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती है ना, आपने बॉन्ड्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड. हैव यू रेड दोस टॉपिक्स? हाँ जी. आयोनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, ये पढ़े हुए आपने? हाँ जी. ठीक है, तो वो क्या थे? इट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन, और वो जो शेयरिंग के दौरान में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती थी बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो अगर हमारे पास एक आयरन का पीस है, तो आयरन के जो एटम्स होंगे उनके दरम्यान में जो फोर्सेस होंगी उनको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और सॉलिड्स चूंकि कॉम्पैक्ट साइज होता है, क्लोजर टुगेदर होते हैं, सो इन बिटवीन द एटम्स देयर आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एग्जिस्ट. ठीक हो गया? हाँ सो जी. जब आप उनको हीट करेंगे, when you heat the particles, now when you heat the particle, उससे kinetic energy of the particle increase होती है. अब what is kinetic energy? Kinetic energy हमने पढ़ा हुआ है कि kinetic energy is the energy possessed, spelling mistake please ignore, possessed by a body due to its motion. अब हमें पता है, you might have studied it, that particles are always in a state of motion. जब भी हम एक सिस्टम की बात करते हैं ना, सिस्टम हम कहते हैं एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. जब भी हम साइंसेस की बात कर रहे होते हैं ना, सो एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अ सिस्टम. और अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की एक टर्म हम यूज करते हैं. इंटरनल एनर्जी बेसिकली इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोजीशन की वजह से जो सिस्टम के पास एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं एक सॉलिड का सेक्शन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक हो गया? अब every particle at its own position will be oscillating. It could be going up and down, back and forth. At their own position उनकी vibrational motion होगी. Solid की अभी बात हो रही है.
सॉलिड लिक्विड गैस की जनरल प्रॉपर्टीज तो याद है ना आप लोगों ने, जो लेक्चर नंबर 9 में पढ़ी है। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे उसी टाइम में बता देना कि ये वाला पॉइंट भी रिपीट कर देना। क्लियर? अब अपना अब जो क्वेश्चन इनकी, क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन आई वाज रिपीट करना, आस्किंग हमने क्या पूछा मेरे। I was asking in the previous chapter you have studied the properties of solid, liquid and gases ना, basic properties तो आती है ना उन सारों की। Properties such as, can you use a synonym? मतलब the ones I have written in front of you, that they have a compact size, they are closer to each other, they have high density, they have high intermolecular forces, fixed shape, fixed mass. I have not studied this in ninth, but I have studied in previous classes. I have a When it comes to states of matter as discussed above, हमारे पास solid होता है, liquid होता है and gas होता है. There is also fourth state of matter, but that's not important for now. When it comes to solid, they have fixed shape. They do not have fixed shape. And they also don't have any fixed shape. Okay? Or we could write for liquids or gases, they take the shape of the container. ठीक हो गया? They also take the shape of container. Solid की second properties हमारे पास क्या होती है? They have fixed volume. पहला point, second point. So does the liquid. They have fixed volume. But gases का volume fix नहीं होता. ठीक है? They occupy whatever space is available. अब इसका मीनिंग ये है बेटे कि अगर मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड की तो फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर हम उसको कंटेनर टू कंटेनर वेरी करेंगे उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड को इस कंटेनर में डालूंगा वर्सेस इस कंटेनर में डालूंगा, इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक हो गया? एंड बट इट्स वॉल्यूम वुड बी फिक्स्ड। Whereas अगर आप गैस को इसमें शिफ्ट करोगे या इसमें शिफ्ट करोगे, इट वुड टेक द शेप ऑफ द, मतलब इट विल स्प्रेड थ्रू आउट दैट मटेरियल जिसके अंदर आपने उसको रखा हुआ है। सो दैट्स व्हाई सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है? दे ऑक्यूपाई व्हाटएवर द स्पेस दे हैव। यहाँ पे साथ में हम वॉल्यूम की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डू वी डिफाइन वॉल्यूम? area occupied by object। ठीक हो गया? वॉल्यूम इज एरिया और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। अब गैस को वट एवर द पॉसिबल स्पेस है वो अवेलेबल होगी, वो उसी स्पेस में अपने आप को मेंटेन कर लेगा। नाउ having fixed shape and fixed volume have to do with the intermolecular forces. Intermolecular forces are strong. Intermolecular forces are weaker. And intermolecular forces are almost zero. Intermolecular forces चूंकि हम पहले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है? द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मैं लिख भी देता हूं, द फोर्स दैट होल्ड्स द molecule in place, or force that exists between the molecules। जैसे मैग्नेट होता है ना, यू मस्ट हैव प्लेड विद द मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के इन बिटवीन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती है ना, इसी तरह
molecules and atoms के in between भी forces exist कर रही होती है जो naturally वहां पे present होती हैं. So these kind of forces are known as intermolecular forces. Since they have fixed shape and fixed volume, the reason behind that is they have strong intermolecular forces. Due to this, particles vibrate at their fixed position. ठीक है? Whereas in liquid, particles are free to move. So does air in gases. अब आपने डेंसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने नहीं पढ़ा हुआ. डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्म. मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass over volume. Since volume and density का inverse relationship है, inverse relationship का meaning क्या होता है कि if one increases, the other decreases. ठीक है? Since they have fixed shape, जो solids have highest densities. Why? Because उनका volume बहुत compact होता है. ठीक है? Particles are very close to each other, so area occupied by the solid particles is very much less as compared to liquid or gas. So they have highest densities. So अगर हम यहाँ पे density को represent करते हैं ऐसे, तो density of solid is greatest than liquid than gas. ठीक हो गया? अब डेंसिटी दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं. डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वी नीड द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द एरिया इट इज ऑक्यूपाइंग. उसकी बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? So solids have fixed shape, they have fixed volume, they have strong intermolecular forces, they vibrate at their fixed position, and solid have highest density. On the contrary, अगर आप किसी एक भी पॉइंट को याद कर लोगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसके रिस्पेक्टिवली वहां पे ऐड होती चलेंगी. Clear with these, and those are melting point, boiling point, freezing point, and condensation. Melting point is defined as the temperature at which the liquid solid cell starts to melt. Or we can also write solid start converting to liquid. ठीक है? अब इसमें हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि for pure substance this temperature is fixed. जैसे वाटर है, it boils at 100 degree C. Sorry, melt की भी बात करें, it melts at 0 degree C. And always keep in mind कि why I have written the rest of the points, पहले मैं एक complete कर लूँ, फिर बाकी चीज़ दूँ. I need to clear this.
You have wrote degree over Celsius. 0 degrees ना, 0 degree Celsius ठीक होता है. Yes. Okay. Then melting point and freezing point approximately equally होते हैं. For example, if liquid water लिखते हैं, if water start melting at 0 degrees C, so it will also start freezing below 0 degrees. ठीक है. अगर हम 0 डिग्री C से अबव जाएंगे तो मेल्टिंग होगा, अगर 0 डिग्री C से बिलो जाएंगे तो फ्रीजिंग होगा. At 0 degree C, two states coexist करेंगी, that is solid and liquid. और ये टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि मेल्टिंग हो, बॉइलिंग हो, कंडेंसेशन हो या सॉरी कंडेंसेशन कह रहा हूँ, मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, at all these temperature for a pure substance मैंने लिख दिया है कि temperature remains constant. ठीक है. At boiling, melting or freezing, temperature remains constant. ठीक है. Because reason भी है, all of the heat energy given to the system is being utilized to break the bonds between the particles. फॉर एग्जाम्पल ये दो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उसके इन बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है. तो जब हम इसको हीट देंगे तो वो इसको क्या करेगी, ब्रेक करने की कोशिश करेगी, एंड पार्टिकल वुड एक्सपेंड और goes further away from each other. ठीक हो गया. So melting, freezing, या ये जो fixed temperature हम तीन डिस्कस कर रहे हैं, at these points the temperature of the system does not change at all, and the reason behind that is that whatever that heat we are giving to the system is being utilized to break the bonds between the particles. Clear? What are these two O's? मतलब ये particles, पार्टिकल के नीचे. अच्छा. ये पार्टिकल itself है ना, उनके दरम्यान में intermolecular forces हैं strong. Okay. 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 So मेल्टिंग पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग. बस ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सिर्फ हीटिंग टॉप करेंगे, दैट वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक. सो बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which the liquid start converting to gas. ठीक हो गया. एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग. इसमें कौन सी टू स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड एंड गैस वुड को एग्जिस्ट. फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास होगा कि द टेम्परेचर at which the solid start converting to, at which the liquid, sorry,
start converting to solid. फ्रीजिंग पॉइंट में कौन सी दो स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड। अब इसका जो कर्व शो करते हैं हम लोग वो उसको हीटिंग कर्व कहते हैं। सॉलिड हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक हो गया। व्हेन यू विल सी दिस फ्लैट लाइन इट मींस इस स्टेट में सॉलिड है और वो हीट होगा। व्हेन यू रीचेस अ फ्लैट पॉइंट इट मींस यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है एंड ये उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया ओनली एट फ्लैट लाइन, ठीक हो गया। When all of this solid would be converted to liquid, then the temperature would again rise. तो इस स्टेट में जस्ट कौन सी होगी, लिक्विड। लिक्विड हीट अप हो रहा है। Then up till it reaches its boiling point, ये हमारे पास कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पे कौन सी स्टेट को एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड प्लस गैस। सो अगर कोई ऐसा ग्राफ बना हुआ हो and they ask you to identify the melting and boiling points, तो हम ये दो points उसमें जो है वो locate करेंगे, ठीक है। So this point would be the boiling point and this first horizontal line would be the melting point of that substance. If we are getting sharp edges, this means substance is pure. अगर हमें ऐसे कर्व शेप्स आ रही हैं, ऐसे कर्व शेप आएंगी, it means substance is impure. But again, we can identify the temperature from these points जहाँ पे आके वो constant हो जाएगा, right? Solids are incompressible, so does the liquids, but gases are compressible. Why? Because there are spaces between the gas particles. बल्कि यहाँ वो उन्होंने shape भी दिखाई होगी। ये देखो, अब सॉलिड के इन बिटवीन कोई स्पेस नहीं है हमारे पास, दैट्स व्हाई हम उनको स्क्वॉश नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते फर्दर ऑन, दैट्स व्हाई दे आर इनकम्प्रेसिबल। ऑन द कंट्री लिक्विड्स में somehow spaces exist करती हैं, but solids and liquids are mostly considered as incompressible. Gases could easily be compressed क्योंकि there are spaces in between the part, ठीक हो गया। बाकी जो कन्वेयन था सॉलिड टू लिक्विड, ये देखो वो जो हमने बात की थी, सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस इज इवेपोरेशन और बॉइलिंग। वो इनको हम फर्दर ऑन स्टडी करेंगे। गैस टू लिक्विड इज कंडेंसिंग एंड लिक्विड टू सॉलिड इज सॉलिडिफाइंग या फ्रीजिंग भी कह सकते हैं हम इसे। अब इसने ये टू कंटेनर्स लिए, इसमें वो शो करा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसमें ये दो बीकर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर हम जो यूज करते हैं ना, ठीक है। एक बीकर को उसने मेजरिंग सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया, एक को उसने बीकर में ही रहने दिया, एंड दोनों के वॉल्यूम्स क्या थे, आपस में इक्वली थे। दिस शोज के वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होता इवन इफ द कंटेनर इज चेंज्ड, ओके। जो काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर है वो हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मैटर और दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड अपॉन एवरी कोलिजन दे चेंज द डायरेक्शन। ये आगे डिटेल में हम लोग जाके पढ़ेंगे काइनेटिक मॉडल मैटर को। ये उनके डेफिनेशन दी हुई है। evaporation, sudden change of liquid into gas is evaporation at any temperature, but change of liquid into gas at fixed temperature is boiling. तो अगर आपसे कोई कहे कि evaporation और boiling में क्या डिफरेंस है, boiling fixed temperature पे होती है, evaporation happens at all temperature. यहाँ पे molecules and atom की definition भी दी हुई है in case you need it. ये solid की सारी properties discuss जो हम आप डिस्कस करें। The particles are packed loosely together in a regular pattern and each particle is in close contact with its neighboring particle. Motion उसका vibration ही होगा, वो सिर्फ अपनी position पे ही back and forth move कर सकते हैं और left right move कर सकते हैं। There is no other possible type of motion for solid क्योंकि वो fixed positions पे। Liquid के particles जो है वो move around कर सकते हैं across the liquid and so does the gases, cause उनकी उसका reason क्या है, weak intermolecular forces।
whereas liquid and gases में क्या होती हैं? Strong intermolecular force. सॉरी वीकर होती है, मैंने गलती ऑपोजिट बोल दिया। ठीक है बेटा। हाँ जी।